नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू थिंकिंग ब्रिज पॉडकास्ट। और आज के हमारे शो में हमारे साथ हैं सीए विवेक अग्रवाल। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मतलब इवन बिफोर वी स्टार्टेड द podcast itself, I was chatting with Vijay and I was just trying to understand his career trajectory. So he qualified CA in the year 21, and after that he worked for KPMG for about 1.5 year, and then he shifted to a mid-sized firm. Now there is a secret behind that, so we are going to understand why did he move from a big four to a mid-sized firm. Now after that he enrolled for Audit masterclass, and we'll hear what was his experience with that. And now he finally got into EY as the assistant manager role, which is a role that you get after like 2 to 3 years of experience, and he was able to back that. So we're going to understand what all challenges did he face in his CA journey, and how was he able to crack the role of assistant manager. And obviously we'll also ask कि क्या pay packages रहते हैं, salaries रहती हैं, right? So let's get started. Thank you, Vivek, for doing this. Welcome to the show. Thanks a lot. So let's start right from the beginning. Tell me your Okay. journey of CA. आपने कैसे CA में एंट्री लिया? किसने मोटिवेट किया आपको CA करने के लिए? Okay. Actually, I'm from middle class family, so mostly, and that too from Mawardi family. Okay, so mostly 12th जब आप पास करते हो तो 12th के पहले आपको CPT के लिए रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है. Okay, so at that time मतलब ऐसे होते हैं ना कि बचपन से किसी के मतलब एम्बिशंस रहता है कि मेरे को पायलट बनना है, कि मेरे को कुछ ये बनना है वो बनना है. तो ऐसा मेरा कुछ था नहीं सीरियसली. Okay, but father was telling that means in after 12 what बीकॉम तो कॉमर्स किया था तो बीकॉम तो करना ही था, लेकिन उसके अलावा क्या मतलब कुछ तो करना पड़ेगा. एंड द फ्रेंड्स वे आर डूइंग ऑल सीए, ऑल वे enrolling in CA, like what something has happened or what. So I had to also join CA. So and luckily I filled the form for CA registration. I did, and CPT I cleared in first attempt. Okay, so after that means the hopes were high for my family that yeah CPT तो एक बार भी हो गया यार, IPC फाइनल एक बार में हो जाएगा खत्म. मतलब बंदा तो 5 साल में CA बन के निकल गया. तो यहाँ पे बट बस मैं आफ्टर थोड़ा दैट सा स्टॉप करने वाली हूँ आपको. क्या आप पहले ये बताइए कि आपको मोटिवेट किसने किया CA करने के लिए? motivation was mostly my friends. अच्छा. My most of the friends were doing CA. So Okay. means there was nothing else for me to do. Means my all the commerce students were doing CA, so I had that motivation only कि यार चलो ठीक है देखते हैं. Because देखते in my हैं. close family there was nobody CA who were means like what you say promoting me or something, telling that CA करने के बाद भाई तू ऐसा हो जाएगा ऐसा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं था. Family से कुछ नहीं था kind of. So that friends motivated me, and when I cleared CPT, I even got in St. Xavier's College, Kolkata. And, it's a Oh, prestigious college in Kolkata. yes. So yeah, so the real struggle started after CPT. That in St. Xavier's Kolkata, the timing is 6 to 10, morning 6 to 10. Boys' timing is there. So and after that, we had to do 3 tuitions in a day. For CPT, for IPCC, we have to do 3 tuitions. So like means and I live in suburbs in Kolkata, in suburbs. So सुबह 4 बजे घर से निकलना पड़ता था, 4:30 बजे तक, एंड रात को 10 बजे घर में घुसना पड़ता था. अरे बाप रे. Means only 6 hours means we were getting to sleep and everything, do everything in that. So means 2 महीना मैंने कैसे कैसे टिकट टाना, फिर मतलब इट वाज क्वाइट स्ट्रगल. मैंने बोल दिया मेरे से नहीं हो पाएगा. मतलब इट वाज क्वाइट हार्ड. मीन्स कहाँ तुम अपने एकदम 12th तक एकदम सही थे और कहाँ एकदम कहाँ चले गए ऐसा लग रहा था. मतलब CPT क्यों ही पास किया ऐसा लग रहा था. बट ओके, कैसे से करके मैंने IPCC पास किया. एंड आफ्टर IPCC मीन्स क्या हुआ था ना, बिग फोर में जाने का. IPCC एक अटेम्प्ट में हो गया था? नहीं, IPCC एक थर्ड अटेम्प्ट में हुआ था मेरा. ओके ओके. या एंड फिर क्या हुआ था कि जैसे बिग फोर में जाने का, तो मतलब सही बोले तो बिग फोर के बारे में हमने सुना भी नहीं था. मतलब जब आर्टिकलशिप के लिए एनरोल कर रहे थे एंड फॉर्म्स खोज रहे थे, तो पापा की कोई जानचीन का फॉर्म था, वहां पे अपने ज्वाइन कर लिया. ठीक है, तो बिग फोर का सही बोले तो मैंने सुना भी नहीं था. ओके, बट जीवीएस कॉलेज में तो
थोड़ा मोड़ा सुनते रहते थे कि हाँ चलो बिग फोर में ये, केपीएमजी में, ईवाई में ये, EY में। लेकिन एक बार क्या हुआ ना कि आई वाज इन अ ट्यूशन, ओके, लॉ ट्यूशन आई वाज देयर, एंड सर वाज एक्सप्लेनिंग सम concept to me, okay, concept to us all of the batch, and one student was sitting in front of me, okay. So he was from big four, okay. So means I skipped some concept, okay. I When sir was explaining, I skipped some concept, so I asked him, bro, means what sir has explained, can you please explain in the different time? So means at that time he turned back and he started speaking in English, and means the attitude level which I saw now, means I was amazed that what is this Confidence. attitude, yeah. Like confidence and attitude also, means I thought, Yeah. where is this person coming from, what means. So I asked my friends, and also they told that he is from this big four and all. So I told that this level of attitude is there and this level of confidence is there in big four candidates. So I was amazed. So at that time only I made up my mind that okay, articleship big four will also not take after 1 year of this articleship. So after qualifying, I will join big four, any big four, but I will join big four. I have to experience this. Means what is there that such kind of ingredient you are getting over there. So Right. yeah. So after giving means first attempt I gave in this final. Okay. In final, my first group I gave only first group. Okay. And in that I got 188. Oh. Only due to audit I failed. Means 35 I've got in audit. So if I've got 12 more marks, I would have passed Yeah. audit. Yeah. So actually, the friends who joined with me at the time of CPT, okay, 70% of them actually skipped. Means actually skipped this IPCs. IPCs they gave 2 to 3 attempts, and after Okay. that they joined MBA or something like that. Only you can take 20 to 30% of friends were there who continued till final. Okay, so yeah. So what happened, and they also gave 3 to 4 attempts, kind of that. Okay. So once I was thinking that if I continue the strategy which they are following, so I will also have to give 3 to 4 attempts and all. What is that? Means I don't have that level of persistence. Okay. So I told that, means I made up my mind that I have to clear in the second attempt. I have to clear anyhow. I have to clear that. Okay. So I started searching that how to clear in first attempt, this that. Okay. Then I came up to Nitin Soni. There is a motivational speaker, Nitin Yeah. Soni. He's means motivational speaker for only CA students. He Yeah. motivates CA students and all. So there is one book. There is one his book, that 7 laws of clearing CA final. Okay, Yeah. so that I read completely, and it was quite means quite amazing and quite interesting that he gave 7 laws of passing CA and all. One law which was that I will do it and I will clear my CA was law of revision. Okay, what he told that whatever you're learning for, means actually the this theory subjects where, means मेरे what you can say थ्योरी से मेरे को थोड़ा सा लगता था ना कि कैसे हो पाएगा। प्रैक्टिकल सब तो फिर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, Correct. लेकिन थ्योरी सब्जेक्ट्स तो मीन्स बहुत डिफिकल्ट लगता था ये कैसे हो पाएगा, एंड खास करके ऑडिट एंड लॉ ये सब। सो व्हाट आई डिड इज I followed his law of revision. What he told that whatever you read in the, you make up a diary, okay, and in each page there must be one. Each page must be for one subject, like law, audit, and like that. Okay, and there what you do, whatever you are reading today, okay, you put a date over there. Okay, after that in 24 hours you have to revise that. Okay, the one day. Okay, 1 3 7 20 means you have to revise what you have read today. You have to Correct. read. You have to revise it one day after, then 3 day after, then 7 day after, and then 20 day after. Like this in a 30 days. In a month, you are revising it 5 times. You're getting to a subject 5 times. So that I followed, and my audit, law, and all were quite good. So after that, I followed that. Even in audit, even this India's accounts India's are mostly, means you can say theoretical kind of. So you have to learn it like audit only. So Yeah. that also I followed this concept. I followed this concept in mostly all the subjects. Yeah, so that helped me a lot, and I passed my CA final next attempt only, November 20 attempt. Okay, Oh. and yeah, in November 20 I passed group one, and group two I passed in January 21. नवंबर 20 में, नवंबर 20 का रिजल्ट तो ग्रुप वन, जनवरी 21 में ही आया होगा ना? नहीं मैंने ऑप्ट आउट कर लिया था ग्रुप टू के लिए। अच्छा 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 अच्छा। ओके, तो ग्रुप टू के आपने, लिए ऑप्ट आउट कर लिया था। हाँ हाँ हाँ, राइट, ग्रुप तो वन आप, दिया था मैंने नवंबर में, और फिर हम्म मैंने ऑप्ट आउट करके ग्रुप टू में चले गए थे।
तो वो तो उसका मई में नहीं दिया होगा आपने, मतलब क्योंकि अगर नवंबर में एग्जाम देते हैं तो 6 मंथ्स के बाद। कोविड था ना, कोविड था ना, अच्छा, हाँ हाँ हाँ, मई है। 20 में कोविड था, तो अटेम्प्ट हुआ ही नहीं था, आपको याद होगा। हाँ, राइट राइट राइट। हाँ। पूरा बवाल तो मच गया था ट्विटर पे तो वो तो सबको यस याद यस होगा। राइट यस, बहुत नेगेटिविटी आई थी उस समय, सही में। राइट। तो क्या? काफी इंटरेस्टिंग जर्नी रही है। शेयर एनी 2 लेसन्स फ्रॉम योर सीए जर्नी जो कि आप अपने हर जूनियर को या फिर अपने जो भी इस वीडियो को देख रहा है उनको आप शेयर, उनके साथ आप शेयर करना चाहोगे। Yeah. First, what I will say, whenever you are doing any tuitions and all, you हम्म should revise that day only. Means आप 10 मिनट निकालो, आप 15 मिनट निकालो, लेकिन एक बार रिवाइज कर लो। कि मैंने देख लिया कि मतलब रिवीजन ही है जो आपको सीए मतलब बना सकता है। मतलब आप सोचोगे कि आप एक पूरा सब्जेक्ट, जैसे नॉर्मली क्या होता है ना, अपने एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं 2 महीना, 1 महीना पढ़े उस सब्जेक्ट को, फिर अपने ऑफिस से स्टार्ट करेंगे तो वो पूरा वो चला गया। बिकॉज हम्म क्योंकि जो नितिन सोनी ने बताया था कि वो एक्चुअली क्या ना, एक स्ट्रक्चर्ड रिवीजन जो होता है, जो आप मतलब शॉर्ट टर्म मेमोरी से आपको लॉन्ग टर्म मेमोरी में कोई भी चीज को कन्वर्ट करना है, तो उसको आपको हम्म वैसे ही स्ट्रक्चर्ड वे में रिवीजन करना पड़ेगा, 1 3 7 20 करके। तो मैंने हम्म वो फॉलो किया था, एंड दैट वर्क्स वेल। मीन्स आपको ऐसा होगा ना कि आप दो मतलब 3 4 बार रिवीजन करने के बाद ना, आप मतलब आप बस पेज पलटोगे, आपको इस लेवल का रिवीजन हो जाएगा कि हाँ भाई, ये तो इसने ये मतलब बहुत बहुत बढ़िया लेवल का रिवीजन हो जाएगा आपका। करेक्ट। सो वन फर्स्ट इज फर्स्ट इज रिविजन। दैट रिवीजन, या फर्स्ट रिवीजन। सेकंड, आप क्या है ना, कि आप जो भी टॉपर्स होते हैं, ये मेरे को भी बहुत हेल्प किया था, जो टॉपर्स होते हैं उनको आप क्या मतलब क्या ना फॉलो करो, या फिर जो भी पॉडकास्ट वॉडकास्ट जो होते हैं उसको आप देखो, क्योंकि उन लोग क्या है ना, बहुत मतलब सब्जेक्ट स्पेसिफिक बहुत कुछ स्ट्रेटेजीज आपको बताएंगे कि मतलब इस सब्जेक्ट में देखो ये स्ट्रेटेजी करने से आपको सही रहेगा। तो वो आप नोट डाउन करोगे और वो आप कस्टमाइज कर लो अपने हिसाब से, बट हम्म वो आप फॉलो करोगे तो मतलब बहुत आपको हेल्प करेगा। आप हम्म फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए बन सकते हो, मतलब वो है, रैंक पे भी ला सकते हो अगर बहुत सही हो तो। या राइट। क्योंकि मैंने ये आपका कंसेप्ट फॉलो किया था, रिवीजन एंड ये सब वाला, तो मेरा 4 सब्जेक्ट में एग्जामेशन आ गया था। ओह दैट्स वंडरफुल। या Right. So, या to दैट्स वाई। summarize, you have to, one, do multiple revisions, and secondly, you have to follow the best practices, especially from people who have gotten really good marks. So, understand the रियली गुड strategies and try मार्क्स। to apply या according to your own style. या Perfect. Let's एंड move थर्ड, on. अच्छा, थर्ड भी है, ओके। जस्ट जस्ट वन वन थिंग, मीन्स ये जो ये टॉपर्स एंड ऑल से मैंने जो पॉडकास्ट जब देखा किया, तो मेरे को क्या है ना कि ये चीज बहुत बढ़िया पता चला कि किसी और के भी काम है ये चीज, तो कि मतलब क्या है ना कि जैसे आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स को देखोगे ना, तो हर एक चैप्टर में 50 100 सम्स ऐसे रहते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, आपको उसको स्ट्रेटेजाइज करके वो लास्ट डे 1.5 डे के हिसाब से आपको उसको करना पड़ेगा, एकदम कंसाइज करना पड़ेगा। तो पॉसिबल नहीं आप 100 सम एक चैप्टर का आप लेके बैठोगे, तो दिक्कत हो जाएगा। मेरा फर्स्ट टाइम में यही गलती हुआ था वैसे, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि जितने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं सबको मतलब क्या ना, वो स्टार दे दे के, मतलब कि फर्स्ट बार मैं देख रहा हूँ कि मेरे को लग रहा है 50 सम्स है थोड़ा सा, बाकी क्या है कि मतलब देखते मेरे को लग रहा है हाँ ये तो हो जाएगा। हो तो जाएगा। फिर क्या है, 2 से 3 बार आप करोगे वैसे ना, तो स्टार स्टार देके आप वो 100 सम्स को आप क्या 15 तक में आप ले आओ, मतलब एकदम इंपॉर्टेंट जो हम्म आईसीआई का भी है, जो मतलब बहुत प्रोबेबिलिटी लग रहा है, जो आपको लग रहा है कि भाई टफ है ये चीज, तो वो क्या ना 15 सम तक फिर भी आप 1.5 डे में आप कर लोगे। लेकिन आप 100 सम्स करने जाओगे तो पॉसिबल नहीं है। एंड सेम टू सेम वो थ्योरी में तो मैंने ये जो रिवीजन का कंसेप्ट फॉलो किया, ये तो मतलब क्या है कि समझ लो 1 डे में मेरा रिवीजन हो जा रहा था, मतलब इस स्ट्रैटेजी की वजह से। तो आपको स्ट्रैटेजाइज बहुत बढ़िया से करना पड़ेगा, प्रैक्टिकल एंड थ्योरी बोथ को, अगर आपको मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना है काइंड ऑफ। क्योंकि मेरे को नहीं लगता ड्रैगिंग सही है, मतलब अगर आप सही स्ट्रैटेजी ये सबसे लगाओगे ना, तो कोई भी हार्ड मतलब कितना भी टफ हो आपका एग्जाम, आप हम्म निकाल सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बता रहा हूँ कि जैसे एसएफएम का अगर आप नवंबर 20 का पेपर देखोगे तो बहुत टफ आया था वो पेपर। ओके, हम्म तो उसके उस समय क्या हुआ था ना, मेरे जितने फ्रेंड्स थे उन्होंने ग्रुप 1 में स्किप कर दी, मतलब ग्रुप 1 को अपलोड करके जनवरी 21 में जो चले गए थे, क्योंकि बहुत हम्म टफ पेपर आया था नवंबर 20 का, अगर आप एसएफएम का पेपर देखोगे। लेकिन मैंने करेक्ट। क्या किया था ना, मैंने यही कंसेप्ट फॉलो किया था कि मतलब प्रैक्टिकल में जितने भी सम्स है उसको एकदम कंसाइज कर दो, 10 15 सम में ले आओ हर एक चैप्टर का। तो मैंने क्या ना हम्म मतलब लिख के प्रैक्टिस किया था, जो एग्जाम के पहले वाले दिन था। तो क्या मतलब ऐसा हुआ था ना कि एग्जाम वाले दिन मेरे को दिख रहा था कि 35 मार्क्स का तो ऐसा था कि जो मैंने लास्ट डे प्रैक्टिस किया था, तो मेरे हम्म को कॉन्फिडेंस था मेरे को, हम्म मतलब ऐसा लग रहा था कि यार होना ही है मेरा। तो मेरा उसमें 47 आया था उसमें से, मतलब कैसे थे कि मैंने बाकी सब भी निकाल दिया। तो वो है, तो आप करेक्ट स्ट्रेटेजाइज करो, आप जो आपका थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों के लिए अलग अलग स्ट्रेटेजी लगाओ, एंड मतलब जो आपको कस्टमाइज करता है आप अपने हिसाब से कस्टमाइज करके करो, लेकिन बट करेक्ट यू हैव टू स्ट्रेटेजाइज इट। correct 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 now let's move on to your story after qualifying CA। तो सीए बनने के बाद आपका वन ऑफ द बिग फोर्स में हो गया, सो बहुत बढ़िया चीज हुई।
लेकिन लेट्स spill the beans on why did you leave Big Four to get into a mid-size firm? आपने Big Four छोड़ के mid-size firm क्यों ज्वाइन किया? ओके मैम, मैं फर्स्ट जॉब मेरा जो केपीएमजी में लगा था उसका मैं थोड़ा स्ट्रगल शेयर करूँ आपसे? हाँ हाँ, डेफिनेटली। क्या? सो मैम, एक्चुअली हुआ क्या था ना कि मेरे को कोई एक्सपीरियंस नहीं था इंटरव्यू सब देने का, एंड दैट टू फॉर अ फ्रेशर एंड ऑल सी ये सब। तो क्या हुआ था कि हम जैसे कैंपस वाले के लिए तो मैंने अप्लाई कर दिया था चेन्नई के लिए, बट मेरे फ्रेंड्स ऐसा बोल रहे थे कि ऑफ कैंपस भी आप देना स्टार्ट करो, कि मतलब हम्म जो भी आपको आए आप देखो, बहुत सारी वैकेंसी आती रहती है बिग फोर ये सब में, मेरे को जाना ही बिग फोर में था, तो मैंने हम्म बिग फोर कंपनी ये सब में देना स्टार्ट किया। ओके, हम्म सो उस समय क्या हुआ था कि आपका अप्रैल मिड से मैंने देना स्टार्ट किया सब, हम्म अप्रैल 21 मिड से हम्म, मैंने देना स्टार्ट किया। ओके, तो मतलब क्या वो फर्स्ट और सेकंड काइंड ऑफ जो इंटरव्यू था, हाँ। वो तो ऐसा लग रहा था कि मतलब सामने वाले ने ऐसा क्या पूछ लिया कि मतलब समझ ही नहीं आता, इंटरव्यू में बहुत बुरा हालत हो गया था। तो मुझे समझ में प्रैक्टिस बहुत सही से करना पड़ेगा, मतलब बहुत कंसेप्ट बहुत सही से बनाना पड़ेगा, मतलब हम्म इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर बहुत बढ़िया से करना पड़ेगा। तो मैंने क्या ना, फिर इंटरव्यू जैसा भी जा रहा हो, फिर मैंने लो फील नहीं, पहले क्या होता था कि इंटरव्यू खराब जा रहा है तो लो फील होता है, यार क्या हम्म सीए बन के भी कुछ नहीं हुआ, मतलब क्या है, मतलब इंटरव्यू नहीं दे पा रहे हो। फिर मैंने लो फील करना बंद कर दिया, मैंने इंटरव्यू को ऐसा, मतलब क्या है ना कि आप जैसे होता है ना, आप बोलते हो कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो मैंने क्या हाँ, फिर प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया, मतलब क्या कि मतलब सात सात आठ इंटरव्यूज मैंने दिए करे, फिर मेरा क्या हुआ कि कैंपस में दो जगह मेरा सेलेक्ट हो गया था, जैसे चेन्नई हम्म में पीडब्ल्यूसी एसडीसी था, और आपका बीएसआरएन कंपनी जो आपका केपीएमजी इंडिया, वहां पे मेरा हम्म सिलेक्शन हो गया था ना, ऑफ कैंपस में मेरा डिलॉयट बीएसआई में सिलेक्शन हो गया था। ओके, ओह तो हाँ, तो ऑफशोर में मेरे को जाना थोड़ा सा शुरू, मतलब शुरू में ऐसा लगा कि यार ऑफशोर में ग्रोथ उतना नहीं होता, ये जो नहीं होता, तो हम्म मैंने सोचा कि एक बार जो इंडियन है उसको एक बार फॉलो किया जाए, तो इसलिए मैंने फिर केपीएमजी चेन्नई ज्वाइन किया। हाँ, हम्म और फिर एक्चुअली क्या है ना कि उस समय कोविड का पीरियड था, तो पूरा 1.5 ईयर जो है हमें पूरा वो मिला वर्क फ्रॉम, हम्म मतलब हम्म हमें ऑफिस बुलाया ही नहीं किया उस समय। हम्म ठीक है। राइट। सो कमिंग बैक टू द तो मेन क्वेश्चन हाँ, वेयर वी स्टार्टेड, बिग या फोर ज्वाइन करने के बाद मिड साइज फर्म हम्म, में क्यों स्विच किया? या मिडसाइज फर्म में मन तो एक्चुअली ऐसे था नहीं कि मिडसाइज फर्म में जाना है, या फिर मन बिग फोर में ही था, हम्म क्योंकि इफ यू आर इन अ बिग फोर, तो बिग फोर से मिड साइज में जाना बहुत डिफिकल्ट होता है, मतलब मिड साइज से बिग फोर में जा सकते हो या बिकॉज यू आर गेटिंग सम इम्प्रूवमेंट, बट मतलब आप बिग फोर से मिड साइज में जाओगे, मतलब you won't be able to adjust there, kind of what या you say. But actually, in September, the KPMG Chennai, they were calling me that you have to be ठीक on है। site, you have to join the office, हम्म join as soon as possible. Even the हम्म director told me that you have to join and all. But हम्म actually, my marriage was scheduled in December 22. Okay, हम्म so you know that all that या shoppings and all the at the time of marriage. So I requested them that, so please means consider my work from home till December. After December, I will be available. There won't be any issues and all. हम्म But they were adamant that हम्म no, Vivek, everybody has come now. We can't means take your request. हम्म So after that, I started searching in Kolkata only. I searched in KPMG also, because in KPMG also you can do means internal job posting. Means if you're in या Chennai, you can join in या Kolkata. So if there are any vacancies and all, but at that time there was no vacancy and all. So हम्म even in other big fours like EY, Deloitte, and PwC, there were no vacancy over there. So I decided that means uh, if मिड साइज फर्म। join any mid-size, if हम्म there's not join in mid-size, and it's a top 10 firms in हम्म Kolkata that which I joined. It was a top 10 firm, so there हम्म was no issue. I told that okay, when I will get the vacancy and all, I will join Big Four. या So I was continuously, even after joining Singi, also I was continuously trying to join Big Four only, because my main motive was Big Four only. राइट। सो Yeah. अब मुझे यहाँ पर आपसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पूछना है, और वो ये है कि यूजुअली हमारे जो कोर्सेज हैं, जो मास्टर क्लासेस हैं, वो हम उन स्टूडेंट्स को बोलते हैं या फिर उन प्रोफेशनल्स को बोलते हैं लेने के लिए जिनका करियर अभी स्टार्ट हो रहा है, या फिर जो करियर स्विच करना चाह रहे हैं, राइट? आप तो ऑडिट ऑलरेडी बिग फोर से कर कर आ चुके थे, तो फिर व्हाट मोटिवेटेड यू टू get enrolled in the audit masterclass even when you had the experience of big fours? Yeah. Means actually, if you're working in a Big Four, okay. So
majorly you are not given more than 2 to 3 FSLIs, means either payroll work paper, cash and bank work paper, or means 3 or 4 work papers you will be told to do at a time. And if you have done 3 or 4 of them, in the next audit also it will be continued. Means uh, for example, if you have done revenue, then the next manager will tell, oh, you have done revenue in this industry only, so you continue doing revenue only. Other, you won't get the exposure to other work papers and all. And so in I wanted to get this thinking bridge. I was seeing the ads and all, and Archit sirs, that how structured in the structured form they are telling each and every work papers, that how each and every work papers are there, how variance analysis is done, how materiality we have seen that materiality work paper is there. But what is the logic behind materiality? Means when we have to take revenue, when we have to take Correct. PBT, when we have to take assets, and what is the logic behind? Means Hmm. uh, in KPMG, what I was doing what they have given me, but the Hmm. logic was not given by them. Means you Hmm. do this like that, but the Hmm. exact logic that why we are doing this, what will be means effect on audit and all, that was not there. So that's Hmm. why I thought of that. Means learning, we must be a lifelong learner. So I thought that, yeah, okay, even if you're going in any big four, you're trying do this masterclass. It will give you a more structured form of Correct. preparing papers and all, the logic behind Hmm. all of them. So that's why I did, and I was completely satisfied when the way he gave it was quite Hmm. fulfilling. So, would you say that audit masterclass helped you in cracking your interview at EY? Yeah, sure. Exactly. Because actually what happened now, Archit always told that whenever you're giving an interview, and if an interviewer is asking you something, okay, Hmm. so always start with the assertions that are Hmm. affecting that FSLI. Okay. Hmm. So it helped me a lot in EY interview. Like Hmm. whatever they were asking me, I was telling them that assertions, these are the assertions. I was starting with assertions only. That these are the Hmm. assertions that are affecting this FSLI. And then I started, they were quite impressed that, yeah, obviously they knew also that I'm from Big Four, but it helped me a lot. This Yeah, audit masterclass was quite good. it helped you in presenting your knowledge in a correct way, Yeah, like correct. using the right keywords and showcasing Yeah. whatever you worked upon already and showcasing that work in a very presentable way. Yeah, 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 sir. Right. Yeah. So another interesting question comes here. You have worked in Big Fours. You have also worked in mid-size. Now compare the Okay. working style of these two firms and on the terms of work culture, obviously थोड़ा सा सैलरी पैकेजेस वगैरह के बारे में बता पाओ एंड किस तरीके से मेजर डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में बिग फोर वर्सेस मिड साइज फर्म. Major difference, what I have observed and what I've seen in this mid-sized firm is that the work is completely unstructured. Okay. Means first in a Big Four, if you go now, first of all, the manager will start the planning. He will divide the work and all Hmm. this thing. Or means what are the requirements from client, all that are means initially only you get all that, and all the work is in a structured format like audit software and all. It's quite good over there, but in mid-size you won't get all these things, that filing you have to do, stickers, sticky notes, these all you have to do. And so it's quite means जैसे अपने articles से ये सब में करते थे ना, मतलब mid size firm में kind of वैसे ही है. मतलब even after becoming a CEO, they are following the same. Means Hmm. nothing changed. I Hmm. thought that means it's a big 10, means top 10 firms in Kolkata. So maybe means from my firm which I did articles with, it must be better than that. But Hmm. the work is quite unorganized. Yeah, Hmm. obviously you will get a knowledge about this, Hmm. but it is quite means Hmm. haphazard. Hmm. Means in a structured way, you will think that you will get any knowledge. It won't be Hmm. possible in Hmm. mid-size. But still, tell me one benefit of joining mid-size firm. Anyone who's out there and he wants to join a mid-size firm, what is the benefit of joining a mid-size firm? The benefit of joining a mid-size firm will be that the work जो होता है ना, work work he will learn a lot than Hmm. the big four. Like Hmm. in a big four, if he's working for 1 year, and in a mid-size, if he's working for 6 months or 8 months only, he will know much better than a big four. Because actually, what happened na, in a big four, you won't be given the full in charge. You won't be a full in charge of audit. The Hmm. work will be divided in
3 to 4 people. Like you do this 3 to 4 work papers, you do this 3 to 4 work papers. But in a mid-sized firm, they will send 2 people. Those 2 people only have to decide what you have to do, what not to do. Each and every responsibility will be on those 2 people. So responsibility, you can tell that responsibility helps that person that to learn more than a big four. करेक्ट. सो वहां पर जो है आपको पूरा छूट दी जाती है. सो देयर छूट दी जाती है. you have more responsibility on your shoulders, and that's why you become a little more वो relentless auditor वाला एकदम आ जाता है उसमें. That's right. Yeah. Okay. Compare salaries. For example, there is a fresher CA. Compare the salary of a fresher CA in a Big Four versus mid-sized firm. In a Big Four currently, if you see 8.5 to 10 now in today's market, 8.5 to 10 you will get. But in a mid-size, that only 7 to 8.5, not more than that. 7 to 8 only you can say, not more than that. Okay. Yeah. Right. Let's talk a little bit about your EY interview. किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे? थोड़े से टेक्निकल क्वेश्चंस अगर आप बता पाए तो. Technical questions mostly were from the amendments in Schedule 3. Okay. Caro 2020. Okay. And what all work I have done means if I have done any revenue work paper or anything, then they were asking about the walkthrough. If you have done of this industry, then please tell us how you did the walkthrough and all the control procedures, UI and IFC means how that kind of, and audit and this like opinions, audit opinions also, like if IFC, if there's something deficiency in IFC, then what will be the effect on the main audit report, like all this means mostly there. And India's 115 and 116 was quite means the focus for them in India's. Got it. So would you recommend Audit Masterclass to anybody who's watching this video and wants to make a career in auditing? Yeah, if he's wanting to make a career in audit, this is quite good. Yeah, you will get to know everything before joining Big Four only. Means in the Big Fours also, this all work papers is done, but to know this, you have to take 6 months, 1 year time over there. That this all is going. But this audit masterclass in 1 month only, you will get each and every knowledge of there. Just you have to go there and hands-on experience you have to take over there. But yeah, in the beginning only, if you have all the knowledge, and if there is some other person who is just joined, you will always have an upper hand to him. Absolutely. That's about it. Thank you so much for doing this. It was a lovely conversation. Thank you so much for such a genuine feedback of our master classes. जो हमारा गोल है कि हम इंडस्ट्री रेडी करना चाहते हैं हमारे लर्नर्स को, हमारे प्रोफेशनल्स को, एंड आई बिलीव हम वो अचीव कर पा रहे हैं. एंड thank you so much for sharing this feedback. And we really hope कि अब आप आगे और भी जो है तरक्की करें अपने करियर में, जल्दी से पार्टनर बने. So thank you so much for doing this. Have a great evening ahead. Yeah, thanks a lot. Same to you.